We'll wait for people to join us. Can I keep the phone like this? Is that okay? No, then you'll be. No, you can't do that. No, I cannot. Okay, I got the message. Yeah, this is better. So I think people have started joining us. Hello, everyone. So we will wait till 6:05 and then start with the session. Hello, It's scheduled for everyone. 6 p.m. Yeah. So we have more people joining in. So people who are joining in right now, just to give you a gist of what is going to happen today, आज हम बात करेंगे कि how and like should people living with diabetes consume mangoes? Rachna, a little louder. Louder. Okay. आज हम बात करेंगे कि शुड पीपल लिविंग विद डायबिटीज शुड बी कंज्यूमिंग मैंगोज, क्या आपको आम खाना चाहिए? अब सिंस हम गर्मियों के सीजन में आ चुके हैं एंड एवरीबडी लव्स कंज्यूमिंग मैंगोज, सबको आम खाना बहुत पसंद है. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट when should you consume it, should you even consume mangoes if you are a diabetic. So I think we have enough people, we can start with the session now. Okay. So hi Ujjwala, Rachna this side. How are you doing? I'm doing good. Thanks for having me, Rachna, for this wonderful topic, which everybody I think is very excited to know about mangoes and diabetes. Right. Yeah. So let our audience know, Ujjwala is a registered dietitian who is also an expert in diet for diabetes. So आज वो हमें हेल्प करेंगे कि हमें अपना डाइट प्लान कैसे प्लान करना चाहिए. अगर आपको आम खाना बहुत पसंद है, आई रिमेम्बर लास्ट वीक आई हैड पुट अप अ पोल ऑन फेसबुक वेयर आई आस्क्ड पीपल कि आपको एक दिन में कितने आम खाने चाहिए, एंड समबडी एक्चुअली कमेंटेड सेइंग दैट ओ आई कैन ईट 10 मैंगोज इन अ डे. बट शायद वो केस नहीं होना चाहिए, राइट? सो Right. yeah, so we will be asking questions. If you have any questions, kindly put it in the comment section so that we can take it up. Okay, so I think now we can start. So उज्ज्वला जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि जो डायबिटीज है उसमें लोगों को आम कंज्यूम करना चाहिए या नहीं? इज ईटिंग मैंगोज रियली सेफ फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज? So yes, anybody who has diabetes, if they want to consume mangoes, it's very important that they are aware of their blood sugars. Of course, हमें मालूम है कि आम जितना ज्यादा मीठा होता है उतना ज्यादा उसका sugar content, that is the fruit sugar, fructose content ज्यादा होता है, and that can spike up the blood sugars. So if you're very fond of mangoes and the blood reports are really haywire, there is no control on blood sugars, then the advice would be keep it in control, like just take half a slice just to tamper your taste buds. But you will have to then keep a close watch on your fruit intake, also total fruit intake. And also because diabetes patients are prone to kidney diseases, diabetes macrovascular diseases. So in that case also, mango having high potassium levels, that needs to be taken in concern, and one needs to really match their potassium count. So if the potassium is high, greater than 5, then anyways the total fruit intake should go low. And mango, because हम typically से mango की बात कर रहे हैं, तो it has to be still curtailed. So it is more in view of what are the current scenarios of your blood report. So you need to be aware. You cannot just start eating mangoes blindly.
बिकॉज सीजन है एंड आपके ब्लड शुगर्स ऑलरेडी बहुत गड़बड़ चल रहे हैं, यू आर ऑलरेडी ऑन इंसुलिन बिकॉज ऑफ दोस हाई ब्लड शुगर्स, देन यू नीड टू हैव अ रियल गुड कंट्रोल ओवर इट. Right, I agree. So I think it totally depends on how your health condition is right now, depending on how your blood sugar levels are. उसके Hmm. हिसाब से ही आपको मैंगोज कंज्यूम करने चाहिए, बी इट वन एंटायर मैंगो या फिर आधा, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ यू शुड बी कंज्यूमिंग इट. Okay, cool. So there are few questions that I would like to take up. So कोई कोई लोग ये भी बोलते हैं ना कि हम बिल्कुल ही मैंगो नहीं खाते हैं. इसी तरह से कि आई हैव डायबिटीज, तो क्या मैं टोटली मैंगोज अवॉइड कर दूं, एंड दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग इट. सो शुड दे कंसिडर डूइंग दिस? So if the sugars are in pretty much control and the person is very health conscious, then they can definitely indulge in, half a mango, even one mango. They can also easily consume 2 mangoes a day, spacing them out. पूरे दिन में मतलब एक साथ 2 mangoes नहीं खाने हैं. आगे पीछे आप space कर राइट. दीजिए, breakfast में खा लीजिए, evening snack के तरीके से खा लीजिए. So if the sugar control is good, then there is no really any need to completely avoid it because it's a seasonal fruit. It is high in vitamin C. In fact, surprisingly, although mango का हम stress लेते हैं कि भाई mango खाने से blood sugars बढ़ जाएगा, but उसका glycemic index जो है वो फिर भी 56 ही है. So it can be eaten in moderation and stress free. उसका टेंशन नहीं लेना है कि भाई मैंगो खा लिया अब उसका ब्लड शुगर्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा. So it should be more in line to your as I said before also कि जितना आपका ब्लड शुगर्स है उस हिसाब से आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कंजम्पशन कितना होना चाहिए. Likewise, if you have good sugar control, then you should definitely include it in your diet. Right. Ujjwala, I also have one more question to ask. Since you also mentioned glycemic index, आप अगर audience को बताना चाहेंगे कि what does glycemic index actually mean? So glycemic index is the impact of the food item. तो basically हम कुछ भी खाते हैं उसका direct impact हमारे blood sugars पे पड़ता है. तो यदि हम बहुत कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर स्पाइक होता है. एंड कार्बोहाइड्रेट में भी 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. तो यदि हम स्ट्रेट व्हाइट शुगर या सिंपल कोई भी ब्राउन शुगर भी यदि आप खाओगे तो आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ब्लड शुगर्स पे 100 जितना जाएगा. एंड उसके कॉन्ट्रास्ट में यदि आप गुड़ खाते हैं तो भी आपका शुगर्स बढ़ेंगे बट इतने नहीं बढ़ेंगे. तो कोकोनट शुगर फॉर एग्जाम्पल, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है. मतलब जैसे ही आप कोकोनट शुगर खाओगे इन कॉन्ट्रास्ट टू रेगुलर शुगर, आप खाते भी हो बट उससे आपका ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता नहीं है, वो स्लो एंड स्टेडी राइज होता है. सो दैट्स व्हाई द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज्यादा किसी भी फूड आइटम का होगा उतना ज्यादा डायबिटीज पेशेंट के लिए इट्स बेनिफिशियल. So look for low glycemic index foods. Okay. And I have also seen people including sugar when it comes to consuming आम रस. जैसे कि आम का सीजन है तो लोग बहुत सारी चीजें घर पे बनाते हैं, अचार हो गया, आम रस हो गया, पन्ना हो गया, इतनी सारी चीजें, बट दे प्रेफर एडिंग शुगर ऑल्सो इन इट. अगर आप बाहर भी जाओ, अगर आप बाहर खाने का मन करे तो वहां भी अगर आपको आम रस दिया जाता है तो उसमें आई एम अज्यूमिंग डेफिनेटली लोग उसमें शुगर ऐड करते हैं. So would you also recommend doing that at home? Not really, actually. अगर because mango अगर खाना है तो हो सके तो pieces या eat in the form of slice. But I can't say and I should not say that कि आमरस खाना ही नहीं है. So if somebody wants to make amras, please do go ahead, make amras, consume it with your rotis, and however you eat it traditionally. But आमरस के अंदर शक्कर नहीं डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बिकॉज वही है जो आम का भले ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है बट हम व्हाइट शुगर या शुगर डाल के उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देते हैं. तो वो जो एक कटोरी प्योर मैंगो रस होगा और एक कटोरी प्योर मैंगो रस के अंदर फिर भी हम शुगर डाल के खाते हैं तो ऑफकोर्स जो ब्लड शुगर्स हमारे स्पाइक होंगे शक्कर वाले उससे आमरस से, वो डेफिनेटली हमारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे. सो अगर आपके घर में ऐसा आमरस बनता है जिसमें हमेशा शक्कर डलती है, शुगर डलता ही है, देन यू हैव टू कंप्लीटली अवॉइड इट एंड ट्राई गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ जस्ट हैविंग प्योर मैंगो जूस, मैंगो आमरस.
एंड उसमें हो सके तो थोड़ा सा इफ यू वांट टू मिक्स सम मिल्क, जिससे कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसका इम्पैक्ट, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे शुगर्स पे होता है, वो लो हो जाए. I think this is a good point to note. Yes. Yeah, because the Rather protein than consuming and the sugar, fat, yes, yes. definitely. Because क्या होता है, people want to have, एकदम प्योर माल. तो अगर आपको प्योर माल खाना है तो it has to be प्योर आमरस. But if you want to control it, because आपको मालूम है आपका रोज खाने में आएगा ही, then dilute it with milk. It will add to some sweetness. The fat content of the milk will reduce the glycemic index, and the protein will make you feel fuller faster. तो आपको एक कटोरी प्योर आमरस विदाउट शुगर वाला खाने के बाद में जो इच्छा होगी दूसरी बार और लेने की, वो भी कम हो जाएगी. तो ऑलवेज गो फॉर लिटिल डाइल्यूटेड आमरस विद मिल्क. Good points. थैंक यू सो मच उज्ज्वला जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि कभी कभी मतलब हमारे इंडियन फैमिलीज में यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं उसके साथ हम 2-3 आम तो रख ही लेते हैं कि अब हम खाना खाने के बाद वील डेफिनेटली हैव मैंगोज बिकॉज यू इवेंचुअली क्रेव फॉर समथिंग स्वीट ऑलवेज आफ्टर हैविंग मील्स. सो वुड यू रेकमेंड दैट ऑल्सो? और जो भी डायबिटिक है उसको अपना मील प्लान कैसे करना चाहिए? अगर जैसे उनको 2 खाने का मन करे या फिर एक एंटायर मैंगो खाने का मन करे तो शुड बी कटिंग ऑन कार्ब्स कि थोड़ा चावल कम ले लिया या रोटी कम ले ली? So actually क्या है कि if you go to see, traditionally आम and amras have been always eaten with protein rich with carbohydrate rich items. तो आमरस को रोटी या पूरी के साथ खाते हैं, या फिर एक अलग डिश होती है अलग अलग रीजन्स में, जो आम का ही जूस होता है बट वो राइस के साथ खाते हैं, तो मांड बोलते हैं उसको. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो भी आम के साथ अकम्पनीमेंट्स ट्रेडिशनली खाए जाते हैं वो ऑल कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं. तो व्हेन यू वांट टू कंज्यूम मैंगो इन द मेन मील, then you should try to keep it a balance of carbs. You cannot just राइट. keep topping up the amras or the mango pieces by itself with same number of rotis or the same amount of rice you were eating before. तो यदि आप 3 रोटी खाने की आदत में है, and if you plan to eat just roti and आम, definitely it's a killer because it is going to just shoot up your blood sugars. तो उसके comparison में you can just include some चने का salad, छोका हुआ चने का सैलेड आप खा सकते हैं, या you include some raita, vegetable raita, to reduce the More total of impact of greens. your blood sugars, on your blood sugars of just the pure combination of roti and aam. Okay. तो वुड यू रेकमेंड ईटिंग मैंगोज इन द डे टाइम एंड द नाइट टाइम? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग वेरिएशंस में खाते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैंगोज का बहुत कुछ बना सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू रेसिपीज यू मेक पिकल्स. मतलब गर्मियों की सीजन आ गई तो सबके घर में एवरीबडीज मदर दे वांट टू मेक पिकल्स एवरी टाइम. इनफैक्ट मेरी मम्मी हर साल घर में आम का अचार बनाती है. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? दाल चावल ले लिया, उसके साथ अचार खा लिया दिन में 2 बार. कोई कोई बेड टाइम पे भी जाके दे वांट टू हैव शेक्स और समथिंग लाइक दैट. So, so of course, that's a very good question, because we are talking about here about different preparations of mangoes, and at the different stage of readiness of the particular fruit. So यदि आप अचार खाते हैं तो वो कच्चा आम होता है, तो उसमें शुगर कंटेंट कम होता है. तो looking at it from the sugar content perspective, definitely कच्चा आम is also very good, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है. एंड यू कैन ईट कच्चा आम और कैरी विद अ लिटिल सॉल्ट एंड काला नमक मिर्ची जैसे स्नैक के जैसे जो रोड साइड पे भी वेंडर्स करते हैं, दैट वी कैन ईट एट होम बाय आवरसेल्व्स. That's a very good way to incorporate something which is hydrating and rich in vitamin C, because we want that a lot of it in this weather, to keep ourselves well hydrated and well nourished. But agar if we are looking at aam ke preparations like aam panna, again aam panna calls for a lot of sugar, because वो आम पन्ना किससे बनता है, कैरी का ही बनता है. बट क्योंकि वो खुद में इतना खट्टा होता है, उसको मेलो डाउन करने के लिए उसकी सावरनेस को बहुत सारा शुगर लगता है. एंड दैट इज लाइक इट्स गुड फॉर अ डे व्हेन यू हैव बीन आउट एंड अबाउट एंड यू हैव बीन एक्टिव. So definitely the sugar will just bring up your energy levels, because जब हम sweat करते हैं when we are in the sun, or generally also if we are at home and the weather is super hot, then what happens is, because of the sweat,
we lose very important sodium, potassium, electrolytes, and also the glucose from our body. So if you're feeling famished, blackouts जैसा चक्कर आ रहे हैं, तो आमपन्ना is the drink to go, and don't deprive yourself then. Okay, but if अगर आपको तो if जैसे डायबिटीज के केस में people are prone to developing hypoglycemia, low blood sugars. तो अगर आप बहुत एक्टिव रहे हैं एंड यू फील दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग दोज लो ब्लड शुगर symptoms such as shakiness, blackouts, hunger pang, that is the time when you should definitely go for juice. This ras, panna can be also another option. Yeah, फिर simply just eat a mango. Okay, and then that is the time you don't want to add the milk in there. Simply just take pure mango juice if you can. तो ये अलग अलग फॉर्म्स जो आम के हैं, हम जिस तरीके से खाते हैं और कब खाते हैं, दैट रियली मैटर्स. लाइक इफ यू वांट टू ड्रिंक अ मैंगो मिल्क शेक, इट्स वेरी गुड टू कंज्यूम एज अ पोस्ट वर्कआउट मील राइट अवे इन द मॉर्निंग. अगर आपका हेक्टिक वर्कआउट हुआ है, यू हैड अ वेरी विगरस वर्कआउट, और या फिर आपने कुछ बहुत अच्छे तरह से वॉक की है, ब्रिस्क वॉकिंग 6-7 किलोमीटर्स की है, you can definitely take a small shot of the mango milkshake in it, so that you can just replenish your stores. But it is going to impact your blood sugars directly. So instead, rather eat a mango after your workout. That is going to just match your requirement of nutrients. राइट. लोग ये भी पूछते हैं कि आज मैंने आम खा लिया, तो उसके साथ शुड आई बी ऑल्सो एडिंग मोर फ्रूट्स व्हाइल आई गो टू बेड? तो क्या ये भी ऐसा भी हो सकता है? So जितना हो सके बेड टाइम पे फ्रूट नहीं खाए तो अच्छा है. एंड जिस किसी किसी को जैसे सोने का, लाइक दे डोंट गेट गुड स्लीप, सो मैंगो can induce good sleep. So then eating half a mango, if the sugars are well controlled, fasting blood sugars बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं आता, it is within the range, then eating half a mango or 3 to 4 slices of mango won't hurt. In fact, it will induce good sound sleep. So then it is fine. But definitely coupling it up with some nuts like walnuts, almonds, they also induce sleep because of the tryptophan in them. So together, the combination of mangoes, almonds, walnuts is going to help a diabetes patient who is suffering with insomnia, sleep apnea, sleep issues. They can definitely have it at bedtime. But otherwise, I wouldn't suggest for no reason to eat mango at bedtime. या फिर हाँ, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, उन लोग का ब्लड शुगर्स डिप होने के चांसेस होते हैं इन द मॉर्निंग time, anywhere between 2 to 4 a.m. because of the insulin that they are taking, long acting insulin. So us dauran, if you were to eat a mango with this nuts combination in the night, it is going to help to prevent the sugar dip and hypoglycemia, जो काफी डायबिटीज पेशेंट्स को होता है. रात को सोते सोते ही उनके ब्लड शुगर्स बहुत ड्रॉप हो जाते हैं, lower than normal, and they feel discomfort, and many people, and it is very fatal to have low blood sugars while you're asleep, because many people are not even able to sense that, and राइट. fatality chances or mortality chances go up. In that case, if you're sensing कि 2-3 रात से नींद ठीक से नहीं आ रही है, नींद उठने, रात को सोने के बाद में 2 से 4 या 5 बजे के आसपास आपको उठना पड़ रहा है भूख के मारे, so please reach out to a healthcare professional, ask for choices, and ask if you can include mango in that bedtime snack. I agreed. So I've also seen a lot of people eating puri with amras. Is that also a good combination? क्योंकि puri में already so much oil is included because it is fried. Would you recommend that? See, I always say that variety is the spice of life, and nobody can eat like only saints want to live like saints, because that is by choice. But if we were to advise humans who do not want to live like saints, and we force them to live like saints, like it was जिंदगी भर सिर्फ सूप सलाद खाओ, या जिंदगी भर सिर्फ आम काट के ही खाओ, कभी आमरस मत पियो, या फिर it's a season and still you don't eat puri amras, I won't recommend that. So having occasional givens, indulgences, they're always good to because food is also one of the very basic necessities, and it definitely provides comfort to our mind and our soul. So if somebody's favorite dish is amras puri,
and they have been waiting all throughout the year, and all of a sudden उनका sugars बहुत बढ़ा हुआ आता है, so definitely the chances are that the person will have to work a little extra on their diet the rest of the day, and एक meal में उनको थोड़ा सा छोले ये आम पूरी खा सकते हैं. Definitely they can include a little chola in that same meal, so that because of the chola they'll feel fuller, and the amras will provide the taste bud and satiety content rather than just overeating or overdoing on amras, because there's just no other food choice on the plate. So if it's a complete meal, definitely amras puri once in a while won't hurt, like once in 3 weeks won't hurt, or once in a month. But again, don't let the season pass away without eating it if you are so fond of it. Right. So I think very interesting points to note here and very important point as well when it comes to considering your health if you are a diabetic. So I think mango season already on है. अगर आपको mangoes खाना है, consume करना है, if you love eating mangoes, definitely go for it. लेकिन make sure कि considerate amount में हो. Make sure कि आपका blood sugar levels भी balanced हो, and make sure the way you are managing your diet plan should also be a very good factor when it comes to consuming mangoes. So, Right. okay, as I think we are done with the session. I'm just going to look at the comments if we have more questions from the audience. Okay, so I think one more question we have here is should it I mean, is it also depends on the kind of diabetes that you have, मतलब diabetic type 1, type 2, इसमें भी कोई डिफरेंस होता है, और इन लोगों को भी उनके डाइट प्लान में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए if they want to consume mangoes, और जो भी आपने सजेस्ट किए हैं चीजें, it applies to all the people. See, actually क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में देयर इज अ डिफरेंस. टाइप 1 डायबिटीज बहुत यंग एज से शुरू हो जाता है, लाइक इट रियली स्टार्ट्स एट द टेंडर एज ऑफ maybe 5 6 3 also, you know. So if a type 1 diabetes patient is very young and they are very fond of food, mango, so we don't want to restrict our children who are type 1 diabetes patients to completely avoid mango. They can use it in their forte when like as a pre-game or a post-game snack. So they can actually consume it as a for dices. Try not to consume mango juices which are store bought or bottled. Freshly made at home is advised, and it can be consumed definitely in one of the parts of the day when the child has been active. So that is about type 1 diabetes. And when they grow up, type 1 diabetes ka to issue is every time, like for all throughout their life they have to manage their diabetes. It is going to be lifelong, and they are on insulin. There is no there is no way out. So then they can definitely incorporate mango and mango items into their diet if very well planned, in sync with their activity, and the insulin can be adjusted accordingly. Now here when we talk about type 2 diabetes, type 2 diabetes is more about lifestyle induced diabetes. There are faulty habits of eating that may lead to obesity, and then diabetes comes in, या फिर family history की वजह से. तो because the person is already overweight, already their sugars are very high, the advice to eat mangoes and the amount, more than the whether eat or not, it's more about the amount. कितना खाना है is very restricted based on their blood sugars, as I mentioned. So यहाँ Right. पर for type 2 diabetes we are always focusing कि somehow it can, the sugars can get better controlled. We don't want them to have high blood sugars just because of faulty meal plan, जहाँ पर सिर्फ carbohydrates है, जैसे पूरी है या रोटी है, उसके साथ आमरस है, चावल है, that is white rice, and then they're taking very little dal because they are just dependent on the amras ka bowls for that liquid food item that we want in the meal. So careful planning is important in both type 1 type 2, but the approach is very different, because type 1s they are very active, they are generally leaner, and type 2s are generally obese, yeah, heavier on the weight. So that needs to be really taken as a close concern. Agree. I think everybody should be taking care of their health if you are a diabetic. Please consider checking your blood sugar levels on time.
उज्ज्वला जी, आप क्या recommend करेंगे? I mean, when should they consider checking their blood sugar levels? Like, Sorry, should I it be can't once hear a week? you, Rachna. So I'm asking कि लोगों को कब कब consider करना चाहिए उनके blood sugar levels check करने? Hmm. So, so blood sugar levels should be, so person with diabetes, they should generally have a good observation about their blood sugars, like fasting blood sugars. They should be aware at least what's the trending range. uh, एक महीने में कम से कम एक हफ्ते का उनको फास्टिंग ब्लड शुगर्स का आइडिया मालूम रहना चाहिए. For somebody who knows that the diet is gone over, out of the window, because they are traveling, या because of the guests at home, या whatever occasion, ये शादी का मौसम भी होता है, तो eating outside all the time, या heavy food, all these, when we know that there are fluctuations in our daily routine which might kind of get us into erratic diet and eating habits, that is the time that the person needs to be aware of their blood sugars, and they should check it more closely. And when you know that your blood sugars, or you're feeling extremely drowsy after the meals, then go for post lunch checkups as well, which are supposed to be done after 2 hours of eating. So then we can really figure out whether the carbohydrates in the diet are immense, are more than needed, which will reflect on the high blood sugars, as high blood sugars postprandial. And then we need to taper it down. So we need to be aware of fasting blood sugars, we need to be aware of pre-lunch, post-lunch blood sugars, if somebody wants to have a good glycemic control and prevent any complications. Okay. So I think we are ending with the session. Very good insights by our dietitian Ujjwala. Thank you so much for taking out time and being a part of the AMA Ask Me Anything session. And to our audience, अगर आपके पास और भी कोई questions है जो आप चाहते हैं कि हम discuss करें हमारे experts के साथ, make sure that you join our group on Facebook, which is Ease Diabetes with Farm Easy. And yeah, we'll be always there to help you out, guide you out. Thank you so much, everyone, for joining us today. Thank you so much. I hope you have a lovely weekend ahead. Thank you so much. Thank you, Rachna.